अस्सलाम वालेकुम। एग्ज़ामिया एकेडमी को इस वीडियो में आपको मैं वेलकम कहता हूँ। इस वीडियो में आपको DAE फर्स्ट एनुअल 2022 का इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर के पेपर में आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये पहला जो पेपर है MGM-221 बिजनेस मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, ये सेक्शन 1 है। इसमें ये शॉर्ट क्वेश्चन हैं। राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 12 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। Question number 1 है which are different schools of thought of economics. Write 3 practical advantages of studying economics. According to economics, what is wealth? Describe law of demand. What is meant by land in economics? What is meant by partnership? What is company prospects? Write down 3 functions of an entrepreneur. In which economic system all decisions are made by the government? What is meant by money characteristics, medium of exchange, how the payment of cross check can be received. Write 3 purposes of IMF, when trade union act constituted in Pakistan, differentiate national and international trade, define trade union, write any 4 important source of advertisement. नेक्स्ट सेक्शन 2 है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन जॉइंट स्टॉक कंपनी, आल्सो डिस्क्राइब द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन बार्टर सिस्टम, आल्सो स्टेट द डिफरेंसेस। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास DAE फर्स्ट एनुअल 2022। एक पेपर है कम्युनिकेशन स्किल COMS-211। फर्स्ट फोर इसका जो सेक्शन है इसमें राइट शॉर्ट आंसर यानी 12 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिफाइन कम्युनिकेशन। नंबर 2 है व्हाट इज मीन बाय ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 3 लिस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन 4 व्हाट इज द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ टू वे कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 which problem can be discussed during the long talk. Question number 7 what is meant by listening skill. Next question 8 what step can be taken to remove listening hurdles. Question number 9 enlist the type of question. Question number 10 what are the impartial questions. 11 what are the characteristics of interview. 12 है define orientation interview. 13 enlist the objective of report. 14 draw the structure of report. 15 है how many type of reports, write their name. In what condition study is effective. What are the 3 skills of reading. Number 18 है define group communication. Section 2 है attend any 2 question. Question number 2 what is the process of communication. Question number 3 what are the steps for planning of meeting. Question number 4 है write note any on the following. Difference between questionnaire and interview. बैरियर इन क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर है इसमें ट्रांसटेक्नोलॉजी का ELTR-225 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट एनुअल फर्स्ट एनुअल 2022 पेपर ए है जी। ये आपका टोटल इसमें 60 मार्क्स हैं सब्जेक्टिव पोर्शन के। सेक्शन 1 राइट शॉर्ट आंसर यानी 18 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीफायर। स्टेट द वोल्टेज गेन ब्रीफली। डिस्क्राइब द ऑपरेशन ऑफ class A amplifier. Describe operation of class C amplifier. What is meant by coupling of amplifier. Describe transistor biasing. State the term base bias. Describe the voltage divider bias briefly. Write down the merit of collector bias. Define upper cutoff frequency. Write down 2 application of RC coupled amplifier. Describe the merits of transformer coupling. State the uses of direct coupling. Write down the name of AF power amplifier type with respect to operation. Describe the application of class B push-pull amplifier. What is meant by push-pull complementary amplifier. Question number 17 है why crossover distortion produced. Question number 18 है write down the frequency formula of a single ended class A power amplifier with resistive and inductive load. Question number 19 है define the negative feedback. Question number 20 enlist the type of negative feedback amplifier. Question number 21 describe the common modes rejection ratio. Question number 22 describe input offset current.
Question number 23, state the term sensitivity. Question number 24, what is meant by regeneration? Question number 25, briefly describe the class C power amplifier. Question number 26, enlist the benefit of negative feedback. सेकंड सेक्शन है सेक्शन 2. इस सेक्शन में आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. डिस्क्राइब द configuration of transistor amplifier circuits, also compare their characteristics. Question number 3 है elaborate the common emitter biasing and with the help of diagram. Question number 4 है illustrate the working of impedance coupled amplifier, also describe its benefits. नेक्स्ट जो आपका पेपर है DAE फर्स्ट कैनवर 2022 ELTR-225 एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. और बी है इसका पेपर बी का सेक्शन 1 है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 18 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. डिफाइन इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द इंटर एलिमेंट्स कैपेसिटेंस. क्वेश्चन नंबर 4 है एनलिस्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑसिलेटर. क्वेश्चन नंबर 5 है राइट डाउन द 4 यूजेस ऑफ ऑसिलेटर. क्वेश्चन नंबर 6 है define the pulse tone oscillator. Question number 7, describe the phase shift principle of RC phase shift oscillator. What is the offset voltage? Describe the summing amplifier. Define common mode rejection ratio. Describe the virtual ground. Write down the name of 4 op-amp ICs and list the uses of 741 op-amp. Define the inverting amplifier. Number 15, what do you mean by bias current of an op amplifier? Describe level shifter. Number 17, describe the compensation of bias current in voltage floor. Define multi vibrator. Describe square waves and list the uses of multi vibrators. Enlist the type of multivibrator. Enlist the uses of monostable multivibrator. Define ramp. Enlist the method to produce the ramp. Define duty cycle. What do you mean by zero crossing detector? Define comparator. और इसके बाद इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं पार्ट 2 के सेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन एंड 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. एक्सप्लेन वर्किंग वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर VCO using 555 timer 555 timer. Question number 3 here, draw the diagram of non-inverting amplifier and drive the formula of voltage gain. Question number 4 here, draw the circuit diagram of the electro-coupled stable multivibrator and explain its working. Explain the working of ampere function generator with the help of diagram. With number 6, write circuit diagram of transistor trigger and explain its working. नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर है जी आपका ELTR-253 कम्युनिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सेकंड ईयर DAE फर्स्ट कैनवर 2022. राइट शॉर्ट आंसर 25 of the following questions. Describe the needs of modulation and demodulation. Question number 2, identify the essential function of ratio receiver. Define the principle of FM microphones. Question number 4, draw block diagram of FM receiver. Question number 5, describe the working of amplifier limiter. Describe the principle of frequency modulation. Write the use of reactance modulator. Write the merits and demerits of AM. What is meant by pre-emphasis? What is the mean by automatic telephone system? Define the function of receiver in the telephone set. What is meant by tone dialing? What is meant by telephone traffic? Describe side tone and anti-side tone. Define the demultiplexing. Define the PCM transmission system. What is meant by space division multiplexing? Describe the frequency division demultiplexing. What is meant by time switching? Define the pulse code modulation PCM. Write the merit of digital telephone exchange. What is meant by space switching? What is internet communication?
what is meant by amplitude modulation, define the index of modulation, write the function of ratio detector, define the pulse duration multiplexing PDM, describe the transmission techniques, define the fax machine, what is meant by gateway exchange, define the function of transmitter in telephone set, what is meant by data communication, write the merit of satellite communication, define the fiber optic transmission system, what is meant by video conferencing, write the demerits of fiber optic communication, what is meant by propagation mode. लॉन्ग क्वेश्चन है, एनी थ्री अटेम्प्ट करने हैं. ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम ऑफ सुपर हाइड्रोजन receiver and explain the function of each stage. Question number 3, explain the working of phase discriminator with the help of circuit diagram. Question number 4, I describe the construction and function of telephone dial. Question number 5, describe the function of gateway exchange. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ELTR-264 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पेपर ए है जी सब्जेक्टिव. ये इसके टोटल जो है ना आपने 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. पहला क्वेश्चन है कन्वर्ट 82, ये एक बाइनरी नंबर है, ये आपका डेसिमल नंबर है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट जो है आपका डिफाइन हेक्साडेसिमल विद एग्जांपल, व्हाट इज इन्वर्टर, ड्रा ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट एंड राइट बूलियन एक्सप्रेशन, implement a plus b using NOR gate, describe the function of XOR gate, what are the universal logic gate, describe Boolean algebra, describe K-map, what is meant by POS, describe the De Morgan theorem, describe half adder circuit, define टू पावर, अभी मिसिंग है ये 18 है, क्या लिखा हुआ है कंप्लीमेंट. अच्छा, राइट फर्स्ट कंप्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर है. डिफाइन 555 टाइमर, व्हाट इज इंटीग्रेटेड लेवल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 7 सेगमेंट डिस्प्ले, डिफाइन SSI एंड MSI, डिस्क्राइब वर्ड प्रॉब्लम, ड्रा द मेथड ऑफ एक्स और गेट, व्हाट इज लैच, explain active low and active high flip flop, describe RS flip flop, what is toggle, describe the stable मल्टी वाइब्रेटर. और इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट आप जो है ना वो क्वेश्चन है जो ये इसके लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन 2, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉलोइंग. जे के फ्लिप फ्लॉप, इसमें ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है. क्लॉक और एस फ्लिप फ्लॉप. क्वेश्चन नंबर 4 है राइट नोट ऑन नैंड गेट एक्सक्लूसिव और गेट. क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका पार्ट ए है कन्वर्ट अ बाइनरी नंबर है इनटू ऑक्टल नंबर. और क्वेश्चन इसकी बी पार्ट है एक्सप्लेन नॉर एंड नैंड गेट्स एंड यूनिवर्सल गेट्स. और क्वेश्चन नंबर 6 है डेवलप द कम्बिनेशन लॉजिक सर्किट टू इम्प्लीमेंट द ऑपरेशन इन द ट्रूथ टेबल. ये अब नेक्स्ट पेपर बी है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ELTR-264. तो पेपर बी में पार्ट बी है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 18 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ मेनी क्लॉक पल्सेस आर रिक्वायर्ड टू स्टोर 4 bits in SIPO register, draw logic symbol of PIPO shift register and list type of registers, write uses of counter. Question number 5 what is maximum number that a 4-bit counter can count, define parallel in serial out shift register, how many flip flop are used in mode 16 counter, what does the term synchronous mean in a counter. Question number 9 है which component are used in DTL circuits. Question number 10 define noise margin, define term Wilmax, write characteristics of TTL, what precaution should be taken while handling CMOS ICs. Question number 14 है define transmitter with example. Question number 15 है what is the advantage of R to R ladder DAC, define interfacing, defining accuracy of a digital to analog converter, name any two ADC errors, define dynamic RAM, what is meant by RAM memory, name magnetic storage devices, how data. Question number 2 है how data is arrayed in UVPROM, name type of ROM,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है एनलिस्ट टाइप ऑफ फॉल्ट इन डिजिटल सर्किट्स। क्वेश्चन नंबर 25 है नेम एनी टू टेस्ट इक्विपमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 26 डिफाइन ट्रांजिएंट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 27 व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लॉजिक पल्सर। और इसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे आपका जो है ना वो सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में आपने अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ द सर्किट ऑफ 3-bit डाउन काउंटर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विद टाइमिंग डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज लेवल ऑफ TTL सर्किट विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 4 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ रैम्प टाइप ADC। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्किंग ऑफ अ CD-ROM। नंबर 6 है राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग लॉजिक प्रोब एंड इंटरनल फॉल्ट्स। और ये था आपका जो ना वो पेपर ट्रॉनिक्स का। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ ताकि और भी लोग फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।